मेहरू जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूँ और मैं लास्ट में जानबूझ के आपके पास इसलिए आया कि एक एक टोटैलिटी में जब आप इस बात को देख रही हैं, तो मतलब जो मुझे मुझे एक अजीब-सी चीज़ बार-बार ये लग रही है, एक पिक्चर आई थी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, मिर्ज़ापुर, सीरियल आया था और उस मिर्ज़ापुर में, और ये अभी का सीरियल है 2 साल पहले का। उसमें ये मानता है उसका एक जो हीरो या विलेन जो भी बोलिए उसको, जो मेन कैरेक्टर है, वो ये मानता है कि ह्यूमन मिल्क से उसको ज़्यादा ताकत मिल सकती है और ही कैन गेट मोर स्ट्रेंथ। तो एक उस 20-22, 25 साल का लड़का होता है, वो कहीं किसी को दादागिरी करके वो कहीं से ह्यूमन मिल्क लेने लगता है और वो रोज़ पीने लगता है। इससे क्या आप इनकार कर सकती हैं कि अगर ये और सेहतमंद माना जाता है और ये माना जाता है कि बच्चे के लिए अगर केवल माँ का ही दूध पे हैं तो, और बच्चे हम सबके घर में वो हैं, बच्चे शुरू के तो 6 महीने शायद उसी पे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब खतरे नहीं है इसके साथ? क्योंकि ठीक है, ह्यूमन मिल्क तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पैसे वाले हैं, पीपल हू कैन अफोर्ड दिस, ₹4500 फॉर 300 ml, जो रेट टाइम, तो अगर मैं वो भी ज़रा एक चीज़ मैं कह दूँ, साक्षी ज़रा 1 सेकंड के लिए वो दिखा देती, जो सेल ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का जो निकला था। इसमें वो है वेयर दे से वी हैव अ वैलिड लाइसेंस, नियोलेक्टा एंड थिंग्स लाइक दैट। ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा या हमारे दर्शक इसको गूगल कर लेंगे, मैं भी इसको लगा दूँगा अभी नीचे अपने उसमें। थैंक यू साक्षी। लगा दूँगा तो इसको। आपको भैरू जी इसका मतलब, मैं तो इसको नहीं कंक्लूड कर पा रहा हूँ। आप इसको कैसे देख रही हैं द होल इश्यू? नहीं, आनंद जी बहुत अच्छा किया मुझे आखिर में बोलने को दिया, क्योंकि एक बैकग्राउंड बनाई है सारे स्पीकर्स ने। और आप जो कह रहे हैं, आप थोड़े इमोशनल हो रहे हैं इस माँ के दूध को लेके, लेकिन कई कारण हो सकते हैं। हम इसके पक्ष में भी बोल सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी। और ये सब तो ये पता नहीं कहाँ तक न्यूली बॉर्न बेबी के लिए ज़रूरी है माँ का दूध, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती है बच्चे को, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ़र्क होता है एक 26 साल के मिर्ज़ापुर के दादा से। तो वो मिर्ज़ापुर के दादा को कितना माँ का दूध मदद करेगा और दादागिरी करने में, इसका कोई सबूत नहीं है। बट डेफिनेटली न्यूली बॉर्न चाइल्ड नीड्स मदर्स मिल्क टू बिल्ड its own immunity, to build its own strength to face the world. तो वो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक सुपरस्टिशन है और काइंड ऑफ बकवास है, और एक नेसेसिटी है। लेकिन ये इस स्थिति में हम लोग पहुंचे क्यों हैं? So I was just thinking all afternoon about the topic you gave me, and it reminded me of a book that was published in 1944, and I request all our viewers and all the panelists to please revisit this book called The Great Transformation by Karl Polanyi, who was an Austro-Hungarian Jewish person who was not an economist, but he was an economic journalist. And he was living in Vienna during the interwar period. And he has compared the economy of pre-industrialized societies to, what we are facing today, to the way we are managing our economy today. जब हमारी most highest regulatory body, which is the government, which should make sure that economic activities are not de-linked from social and cultural aspects of life, when the people in power are themselves engaged in making individual benefits economically, materially, then who is going to regulate the common man, or to stop the common man from also not trying to make profits in different ways? So in The Great Transformation, what this brilliant writer simply says that, we should not allow the market to dominate human existence. The center of the universe should always be the human being. But exactly the
opposite is happening in our modern day society, where the human being is being battered to make the market stronger. So I think what we have to do, I don't know where we are going to find economists and institutions that will continue to embed economic activities together with cultural and social and political activities that are responsible for a healthy society. Today, in the pre-industrial times, profit was not the only consideration of the economy. There was the barter system, there was reciprocation. So if you had more rice and I had more wheat, then I gave you wheat and you gave me rice. So there was a human interaction which is missing, I think, in business transactions today. सो इफ हर चीज की दलाली हो रही है, औरतों की दलाली हो रही है, बच्चों की दलाली हो रही है, जूतों की दलाली हो रही है, तो फिर व्हाई नॉट उसी में ये माँ के दूध की भी दलाली हो रही है. इट इज नॉट सो सरप्राइजिंग. सो आई थिंक what we have to do, I mean, I'm talking of I think a utopian situation where economic activities should not dominate cultural, social and political activities, where economic activities are just another part of human existence. What we are doing today is making the market dominate other aspects of our life. So culture doesn't matter, bhaichara doesn't matter, friendship, human relationships don't matter. तो फिर ये सब तो होगा. You know, everything is on sale. And entrepreneurship is celebrated, but nobody looks at what are you trying to sell and for whom. You know, so I think it is a deeper ethical and moral issue where people engaged in businesses have to also do business by arousing their conscience. You know, you can't just go after money and profit and trample over the other sensitive and tender aspects of life. So uh, I think it's a huge social problem that we are looking at. मेहरू जी, मैं आपसे एक चीज और कर लूं, क्योंकि ये एक डॉक्टर मानसी ने एक नया एंगल, मैं इसको सोचा भी नहीं था. व्हेन शी सेड कि 42 मिनिस्टर्स में 4 आर वो, ये देखिए ये आधी आबादी के साथ तो कई जगह जाती होती रहती है. मैं यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल बात होने से कहीं डिस्कशन और चला जाएगा. लेकिन मेरे लिए भी ये शॉकिंग है. मतलब माइनॉरिटी का तो कोई अल्पसंख्यक बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बनेगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, कम से कम 42 में 21 तो बना देते. और ये हम सबको पता है कि आपको इस पे क्या कहना है? वेयर इज द व्हाट इज द ये डिसीजन मेकिंग में कहाँ ये इतनी गलती हो गई? सो लॉपसाइडेड. वही तो टॉप से रेगुलेशन इंस्टीट्यूशंस वी आर लूजिंग. We have the responsibility of that the government has towards its citizens. You know, that is not being fulfilled. Everything is being given to business people to do as they wish. So मेरे ख्याल से, I don't know, maybe I'm not as much of a feminist as डॉक्टर मानसी, लेकिन औरत वहां बैठे अगर फायदा हो जनता का तब तो ठीक है. अब हमारी वित्त मंत्री की तरह थोड़ी औरत जो हमारे बजट में होल पे होल किए चले जा रही. व्हाट इज द यूज ऑफ अ वुमन or a Dalit minister when they forget their community, when they forget who they are when they are in power. तो मतलब ये तो मजा भी आता है जो लोग पावर में हैं कि एक उन्होंने टोकन फेस आपके सामने रख दिया. लेकिन जनता को कहाँ फायदा हो रहा है?
जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वो मुसलमान मंत्री हो, चाहे वो औरत मंत्री हो, चाहे वो दलित मंत्री हो, हमारा फायदा कौन कर रहा है? सो आई थिंक हाउ टू get society to force its institutions and its government to force it to do good for us. You know, this is the प्रॉब्लम. क्योंकि ये पोलियानी साहब तो इतना भी कहते हैं, his conclusion is that if efforts to subordinate society to the market ultimately fail, bringing dangerous societal reactions of different magnitude and character, most prominent among them fascism. तो हमें थोड़ी थोड़ी तो झलक दिख रही है जो you know, when nothing is in the control of the public, everything is in the control of individuals. So individuals are making hay while the public is suffering. And maybe Dr. Arun Gupta is aware of the protest of social activists in America when they realized that black African very poor women were being used to donate or to sell their breast milk, you know, to the corporate sector. You know, can you imagine? Not even to the hospital, but to a corporate sector. So how to save our public health institution? How to save our public education system? I mean, these are issues which I don't know how civil society can deal with it. Because ये जो दाई का जो institution था in pre-industrial society, this was not a business transaction. It was done for the community. अगर माँ का इंतकाल हो गया या for some reason the mother is unable to breastfeed, it was very natural because I did not, it was not my mother whose breasts I suckled, but my nannies. तो नानी के ब्रेस्ट में मिल्क तो नहीं था, लेकिन वो इमोशनल solace and that comfort that the infant gets in the arms of a loving human being, you know, that also makes. So hame I think डॉक्टर मानसी, आई थिंक सब चीज औरत की बिक रही है, इंसान की बिक रही है, इंक्लूडिंग जमीर. तो हमारा अगर जमीर हम अपना सेव कर लें कि दिस इज यू नो वेरी वेरी इनह्यूमन the way we are running our society and conducting our life, you know, where the individuals are allowed to benefit at the cost of the society. So in a system where the profits are being made by individuals and the benefits are not trickling down to the maximum number of people, you know. तो ये गुर्बत की भी बात है. जो गरीब औरतें हैं उनका तो massive exploitation होगा, you know, like you know, surrogate wombs and surrogate this is you know, we have to do something about ghurbat also. We have to do something about the poverty amongst the female population of this country.